हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल रिएक्शनिस्ट। आज हम जिस वीडियो को रिएक्शन देने जा रहे हैं वो है लग्जरी इंडियन ट्रेन मुंबई टू गोवा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। And now we want to share with you the way away. So be sure to subscribe down below, give us a like, and hit that little bell so you can follow more of our adventures. Let's go. As you can see, we are on a train. And we look like crap. Here's the thing. It is just before 5 a.m. We woke up just before 4 a.m. at about 3:45. We took an Uber here to Dadar Central Railway Station in Mumbai. And today, we're taking a luxury first-class look at India's rail travel. Yeah, we splurged a little bit more, a little bit extra, just to get this really awesome seat. As you can see, the windows and the ceiling are made of glass. This train car is called the Vista Dome. It is the only train car on this whole train that has this. So they were on the wait list for this, in fact, because it's that popular. Yeah, nobody's here right now at this time in the morning, but I'm sure it'll fill up during the day. We have almost 10 hours on this train. So, it better be comfortable. नाइस। इंडियन रेलवेज अच्छा एक तरह से इंप्रेशन फॉरेनर्स को भी जाता है कि इंडियन रेलवेज वेलकम यू। Alright, it's 5:25. The train's taking off. ताकि समझ We're भी ready सके to और start ये our luxury experience here in India. इंडिया रेलवे की बेस्ट पार्ट ये है कि विंडोज बहुत बड़े-बड़े होते हैं। हाँ You brought that with you. मेट्रो I had it in my bag. I've had it in my bag this whole time, but I don't think I've used it. I think we got it on like a plane or something. Alright, enjoy your rest till the sun comes up. काफी कम, लेकिन व्यू काफी अच्छा होता है। बिल्कुल। वाह, बारिश में ट्रेन का सफर कुछ और ही। Alright, 6:30 a.m. The sun has come up. Ashley tried to sleep, didn't quite work. Yeah, I don't think that I हम slept किसी at all. बात महसूस कर Maybe we have lots of time, so maybe a little later. You're quite bundled up. Something to note, there is AC on this. This is an AC train, so well, not train car. So it's a bit chilly in here. I got my puffer coat out. यार ये तो बहुत बोरिंग लगती है, इतनी ब्यूटीफुल व्यू है और ये सॉरी। On your Indian luxury class train experience, you can have a catered अच्छा मैगी breakfast. में मस्ती We है। ordered breakfast. It's about 100 rupees, about $1.50. We got noodles. अच्छा We वैसे also इंडिया में ordered मैंने some एक चीज chai. नोटिस की It's कि वहाँ coming. मैगी काफी And खाई जाती है। हाँ रेस्टोरेंट में We मैगी have का water. मेन्यू आता है। Guys pushing the cart down the aisle. Just asked us what we wanted. We asked how much it was. Easy as pie. It's like top ramen. Yep, it smells like top ramen as well. If we were more prepared, I think that they might have hot water. We could have brought it ourselves and made it. Oh, girl, we in luxury. You don't bring your own noodles. I think most of the locals अच्छा लग्जरी did. में सब खाना नहीं डालते। Yeah, we're high class. We're rolling. But we didn't know, and we didn't have really any time to prepare. Yesterday was a full on day, and we weren't sure that we were going to get on this train. So this is actually luxury when you planned on not eating for 10 hours. यार कप्स में भी होती है और लोग होती है वहाँ। और ये बहुत impressive Indian लगती है। chai since we've been back. It smells so good. We are so looking forward to this. We love chai. It's like one of our favorite things here in India. We were really excited to try it again. I always call it chai tea because that's what we call it at home, and that's what I always order at Starbucks. But that means you're kind of saying TT, which is embarrassing. So it's just Chai. It's Yes, spicy. it's It's creamy. chai. It's just full of flavor, and I love it. And I cannot wait to drink it. But why are the cups so small? I want a big mug. It's so good. यार बारिश भी हो रही है फिर से ना हो तो इनको भी पता चल गया कि यहाँ का ट्रेंड है। बस पकौड़ों की कमी और है। ये इंडिया और पाकिस्तान दोनों में ये जगह ट्रेंड है बिल्कुल। चाय के साथ। अच्छा जी, ट्रेन बनाई जा रही है। Chai tea, round 2. अरे Can't get वाह। enough of this stuff. ये लोग But अभी you may be thinking to yourself, वापस Josh बारिश and फिर आएगी Ashley, चाय की जैसे। what is a luxury या बाहर experience like स्टारबक्स this gonna set you back? स्टारबक्स में Well, Starbucks we are on the Jan Ah. Shatabdi Express. It is a Shatabdi line, and it is an express. Shatabdi. There are 3 different classes that you can ride अच्छा in. इसका नाम शताब्दी First है। is the normal people's cars.
This is second class. There's no AC. It's $4. approximately equivalent to $4 and it's kind of a free-for-all. 4,000 It's whatever. We've done it before. It's fine. $4, It's $4. not too Ah, bad. तो And कितने हुए? people are selling things in the Almost car. 400 से भी You can कम। get off and get food at हाँ, any ये point you want, ये really, सीधा। whenever we stop. Not too bad. If you want to have a कम much तो nicer वो नहीं। experience, you can go to the AC chair car. अच्छा, This chair is का approximately $14 $14 वो तो and you get an Exactly, assigned पता नहीं seat Indian- and you get a Indian nice visa window all to कितनी है, yourself. $1 Or you can upgrade to the absolute baller status and get executive seating in the Vista Dome, which is where Ashley and I are today. जो It's 2000 approximately $31. You get a giant Vista window as well as a sunroof, $31 and you have a little guy bringing you food and stuff and helping you out. While in luxury, you get a few different amenities. One being outlets so that you can charge your computer if you're editing a video. There's also a blind if it's too sunny outside. Not a problem we're having today though. There are electric doors when you walk in, which is really fancy, and our chairs recline. Everyone just seems to be relaxing and chilling. This is like a way better experience than expected. But perhaps the best thing and the thing that you're really paying for is the fact that you get to see all of India through these huge, huge windows. This is the Vista Dome. ये after विंडोज all. काफी पसंद है। हाँ, ये बहुत ये चीज बहुत अच्छी लगती है यार। अच्छी वाइब्स भी अच्छी देती है हाँ। और एक इनके लिए फीलिंग भी- अच्छी आती है। वो हम्म। देखो कितना खुला खुला रोशन और ऊपर भी हालांकि उन्होंने दिया है। हाँ So you're wondering to yourself, what is a bathroom like in a luxury Indian train? Well, this is a sink, a little mirror, a window to the outside, a toilet. But it doesn't go down to the tracks like the ones that we've used in the past. There's a nice little fan, sprayer guy. यार फैन भी दिया हुआ है। Not too shabby. काफी- This is a little sprayer guy. We've done cheaper trains in the past in India, and the bathrooms are completely different. Pretty much just a hole in the ground and you squat. This is a Western toilet. It's really nice, actually. Super clean in here. Now I'm gonna use the toilet. With running water and soap available, and it doesn't smell in here, I'm actually really impressed. देखो पीछे वो भी दिया हुआ है प्रोफाइल। बहुत ख्याल रखा गया हर चीज का। देख इलेक्ट्रिक डोर्स भी है। सामान वगैरह अच्छा सामान के लिए अलग वो दिया हुआ हाँ, है। वाह क्योंकि भाई यहाँ तो आएगा नहीं ना। हाँ We're nearing our destination, and once again, our luxury lunch has पुलाव और arrived. बिरयानी। Catered, served directly from the porter himself. Yeah, we decided to go with biryani Biryani. with chicken, so it should be really good. Something that we're familiar with and really, really like. क्या मौसम है बेस्ट टाइम पे गए हैं ये लोग। वाकई। क्योंकि अगर सूरज निकला होता और इतनी बड़ी खिड़की से धूप हाँ। 10 डायरेक्ट hours अंदर आती later, ना। here we लेकिन are. वो उन्होंने कहा कि वो We've चीज just लगी arrived हुई at है। the Vivam train station here in Goa. We're headed to a little seaside Oh. town called Vagator. We're taking a prepaid taxi. It's about 600 or just under 9 USD अच्छे लोग पहुंच to get गए to our शायद। Airbnb that Ashley set up. It is wet outside. It took us a little while to find our place, but we're here. We're living in kind of like a tin hut. It's almost like camping, but we have a living room, a bed, and a tiny kitchen. It's all in one. And actually, it comes with a moped, which means if we're brave enough, we're gonna go out and fight the rain to get some groceries. We'll see. But I am hungry, so we need to figure something out. It is really wet out there, and all we have is a moped. So I hope you enjoyed that look at luxury travel here on the trains in India. We're going to be in Goa for a few days. Weather permitting, we'll be able to film some stuff here. If not,
the next video will be another train ride back to Mumbai. We will share something that we do here. I'm sure we'll show something at some point. Anyways, wait fam, I hope we encouraged you to get out there and travel today, and we will see you in the next video. Night. Night. That guy was cute. वाकई यार ये तो बस ट्रेन के तो हम पहले भी वीडियोस पे रिएक्शन देते आ रहे तो ये मतलब बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत ट्रेन थी मतलब इंडियाज़ के अब अभी अगर पुरानी वीडियोस को भी उठा के देखिए तो हर ट्रेन अभी ट्रेनों में सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है तो ट्रेन तो ओवरऑल जहाँ आप ट्रेवल कर रहे हो सीट वगैरह मतलब इन द ट्रेन वो तो होता ही है साफ़ लेकिन बाथरूम की अगर बात की जाए तो पहले भी हमने वीडियोस पे रिएक्शन दिए तो इस वाले पे भी मतलब बाथरूम को जो दिखाया था बहुत ही ज़्यादा क्लीन था और ज़्यादा अच्छा बना था विंडोज़ बहुत बड़ी थी और बड़ी विंडोज़ बहुत ज़्यादा मतलब बंदे को फिर नहीं लगता टाइम जितना भी मतलब ले रहा हो ट्रेवल में वो टाइम बंदे को लगता नहीं है क्योंकि आप सारे व्यूज़ देख सकते हो बाहर मतलब जो भी हो तो बहुत अच्छी लगी ये वीडियो देखकर वाकई इसी तरह वीडियो काफ़ी अच्छी थी और सबसे जो मैं हमेशा कहता हूँ कि जहाँ सफाई नहीं हो वो जगह मुझे काफ़ी अच्छी नहीं लगती और वो लोगों को भी अच्छी नहीं लगती लेकिन ट्रेन में सफाई का काफ़ी ख्याल रखा गया था इवन बाथरूम में फ़ैन भी लगा हुआ था प्योरीफायर वगैरह लगा हुआ था तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा और इसी तरह जो फॉरेनर्स आते हैं वो भी इसी चीज़ को अट्रैक्ट करते हैं कि भाई हर चीज़ का ख्याल रखा गया और ये लोग फिर इसी चीज़ पे ये ट्रैवल करते हैं और रही बात फूड की तो हम लोगों ने तो इनको भी आदि कर चुके चाय और बिरयानी और इसी तरह टूरिस्ट जो पाकिस्तान आते हैं वो भी बिरयानी और चाय की तरफ इनका वो होते हैं कि मिसाल अट्रैक्ट होते हैं कि मिसाल वो हमेशा यही चीज़ वो करते हैं तो ये अभी आजकल मैंने सुना है कि बाहर भी जैसे फैज़ान ने कहा स्टारबक्स में भी ये टी मिलती है और तो लेकिन फिर भी जो टेस्ट यहाँ पे है वो शायद वहाँ ना मिले तो मुझे ओवरऑल वीडियो काफ़ी अच्छी लगी बहुत ही मज़ेदार किस्म का इंटीरियर दिया गया है एक क्लीन लुक और इतना वाइड ओपन हालांकि और सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि इतने सारे लोग जिस तरह हम लोग प्रेफर करते हैं कि अगर हम लोग कितनी ट्रैवल कर रहे हैं अगर हम इतने पैसे दे रहे हैं जिस तरह उन्होंने बताया कि $31 हैं जो अप्रॉक्सीमेटली 3,500 हो जाते होंगे तो उसके लिए हम लोगों को केबिन मिल जाए अलग से और हम अलग से सुकून से बैठ के अपना प्राइवेसी के साथ हैं लेकिन इतनी खामोशी और इतना यानी कि लोगों ने भी उस चीज़ को मेंटेन किया हुआ था कि यानी कि बिल्कुल एक दफ़ा भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि शोर हो रहा हो या कोई नॉइज़ पोल्यूशन हो या इस तरह का कोई सीन हो बहुत ही अच्छे से हर चीज़ को मेंटेन किया गया था और लोग भी बहुत अच्छे थे इसी से पता चलता है कि वो लोग अपने रेलवेज़ का और अपनी चीज़ों का कितना ख्याल रखते हैं और रेलवे फिर बदले में उनके लिए कितना कुछ कर रही है तो आज की वीडियो बहुत ही मज़े की थी बहुत ही अच्छी लगी अगर आप इस तरह के हमारे और रिएक्शन देखना चाहते हैं तो आप कमेंट करके हमें नीचे बता सकते हैं और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको जो नई वीडियोस आए हमारी वो मिल सकें और बेल आइकन को भी दबा दें थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अल्लाह हाफिज़